Hello students, now today we will discuss the next topic about the cannabinoids. Okay, so you know very well and I have discussed yesterday about the drugs and drug abuse. Okay, now we are going to discuss the effect of the cannabinoids. Now what are the cannabinoids? These are the other kind of the drugs. Okay, just like the opioids. I have told you that opioids is the category of the drugs. It means to say that opiates includes those all drugs which are sedative and painkiller, जो पेन किलर इफेक्ट के होते हों और जो sedative होते हों. It means sedative means क्या होता है, they never induce the sleeping but reduce the pain. Okay, so they are opiates are the painkiller, especially the morphine, you know, and you have already studied about the morphine, heroin and also the smack. These are the alternative term for the same drug. Okay, so now we are going to discuss that what are the cannabinoids. So the cannabinoids are those drugs which causes the effect especially on cardiovascular system. Okay, क्या होता है ना कि इस तरह के ड्रग्स हमारी बॉडी में जैसे ही पहुंचते हैं तो स्पेशली दे रिएक्ट विद द कैनाबिनॉइड्स रिसेप्टर्स ऑफ आवर ब्रेन. जैसे ये ड्रग्स पहुंचेंगे हमारी बॉडी के अंदर तो ब्लड्स के थ्रू ये ब्रेन में कैनाबिनॉइड्स रिसेप्टर्स होते हैं, तो वो कैनाबिनॉइड्स रिसेप्टर्स के साथ रिएक्ट करेंगे. दैट्स व्हाई द टर्म इज गिवन कैनाबिनॉइड्स. जस्ट लाइक opioids react. Where does opioids react? Opioids react with the opioids receptors of the brain, but the effect is different, that they always make a effect on cardiovascular system. They increase the blood pressure, especially they especially affect the heart and blood circulation. So that's why they especially affect the cardiovascular system. That's why I say. So now how the mode of intake of these drugs, कैसे लिए जाते हैं. जैसे ओपियाट्स थे या जो मॉर्फिन जैसे ड्रग्स थे, दे ऑलवेज बी टेकन लाइक बाय इंजेक्शन, थ्रू द इंजेक्शन ऑल्सो, एंड लाइक थ्रू द स्नर्टिंग मीन्स सूंघने के जरिए, इनहेलेशन के जरिए लिए जाते हैं ओपियाट्स ड्रग्स. तो सिमिलरली दे ऑल्सो बी टेकन बाय इनहेलेशन, नाक के जरिए, ये भी सूंघ कर ही लिए जाएंगे. And also the one different, they are also be taken by ingestion mode. Opioids never be taken by ingestion mode. Okay, opioids कभी भी ingestion यानी कि उनको orally नहीं लिया जाता है, लेकिन these drugs are taken also through our mouth, like through the mode of ingestion. Okay, ये ingestion और inhalation दोनों method से लिए जाते हैं. Okay, so this is the different from the opioids receptors कि opioids they are always be taken by intravenous injections also, but they never be taken through the injection. Okay, so next you can say that cannabinoids, the source of the cannabinoids especially are the cannabis sativa. Okay, cannabis sativa is the source, is the name of the plant. Just like opioids, it means morphines always be obtained from the plant like poppy plant. Okay, poppy plant scientifically you can say Papaver somniferum, but here the source of cannabinoids are cannabis sativa inflorescens. Inflorescens, you know, inflorescens का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा फ्लावर्स होते हैं उनका एक सीक्वेंस, यानी फ्लावर से ही इसको हम आइसोलेट करते हैं. एंड व्हेन सम टाइम the cannabinoids isolated or obtained from from their regions, from inflorescens, from leaves, so they combinedly called hashish, charas, ganja and marijuana. The combination of cannabinoids when obtained from regions, leaves, inflorescens, flowers, so this combination is called hashish, charas, ganja or marijuana. Okay, these are the other alternative terms for cannabinoids. Cannabinoids is the category of the drugs, you know. So now the most important points regarding the cannabinoids is that कि what will be the effect when taken in a high dose. These cannabinoids are, तो what will be the effect when these drugs are taken in high dose. तो क्या होता है, ऐसा ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि what will be the effect when cannabinoids taken as a high dose. Okay, so high dose will cause the effect just like a stimulant. Stimulant you will also study later about after this drug.
स्टिमुलेंट क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा आपको एक तरह से स्टिमुलेट कर देते हैं, इंड्यूस कर देते हैं किसी भी वर्क के लिए, एंड फील लाइक ए यूफोरिया, सेंस ऑफ यूफोरिया, बहुत ज़्यादा एनर्जी को डेवलप कर देना आपकी बॉडी में, कुछ भी करने के लिए तैयार रहना। तो ये अगर बहुत ज़्यादा हम ले लेंगे, बहुत ज़्यादा डोज में हम ले लेंगे, तो दे ऑल्सो मेक ए स्टिमुलेंट इफेक्ट एंड ऑल्सो लाइक ए हेलुसिनोजेंस। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा एक तरह से हमको कंफ्यूज कर देंगे। अगर हम इनको हाई डोज में ले लेंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा, हम कोई डिसाइड नहीं कर पाएंगे, किसी भी चीज़ के बारे में डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर इनको हाई डोज में लेने से दो तरह के इफेक्ट कॉज होते हैं, दे विल एक्ट एज ए स्टिमुलेंट एंड हेलुसिनोजेंस। हेलुसिनोजेंस is also a category of drugs. Stimulant is also a category of drugs. These will be studied later in this after this drug. Okay, so this is all about the cannabinoids effect, source and mode of intake. Okay, if you have any confusion then you can discuss with me, and also I am giving some of questions regarding to these topics, so try to solve those questions, okay, without taking the help. Then you can see and you can judge yourself ki what have you learned till now from these two drugs about the cannabinoids and also from the opioids. So try to answer those questions which I am giving you, okay, sincerely and without taking the help, to know about your what have you learned and also what is the level of your knowledge. Okay, thank you.